अस्सलाम वालेकुम, इट्स हमजा यार। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, तो आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना P1 के अंदर हम सबसे बड़ा टॉपिक आज करने जा रहे हैं, जो कि कौन सा है, चैप्टर 3, दैट इज हार्डवेयर। अच्छा, इसकी जी सर। रिकॉर्डिंग आप अवेलेबल होगी यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक मैं इसके बाद शेयर कर दूंगा। ओके सर। चैप्टर 3 के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, या फिर इसको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तीसरा टॉपिक है हमारे पास डाटा स्टोरेज। फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सर जॉन वॉन न्यूमन। सही है। इन्होंने एक आइडिया आया इनको। वो आइडिया ये था कि ये चाह रहे थे कि जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर हम रन करें वो सारे उसके अंदर क्या हो जाएं, स्टोर हो जाएं। इनको एक आइडिया आया और उस आइडिया में इनको जो आइडिया था वो ये था कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, कि जो सभी प्रोग्राम हम डाउनलोड करें या जो सभी प्रोग्राम हम रन करें, चाहे वो गेम हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, वो सब क्या हो जाए, वो स्टोर्ड हो जाए हमारे कंप्यूटर के अंदर। और जब स्टोर हो तो वो स्टोर सर कैसे हो, परमानेंटली स्टोर हो जाए। सही है। इस आइडिया को हम कहते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। आइडिया क्या था सर, जॉन वॉन न्यूमन को एक आइडिया आया, वो क्या था कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यानी कि जो सा भी प्रोग्राम है वो स्टोर हो जाना चाहिए परमानेंटली। कहाँ पर स्टोर होता है परमानेंटली? हार्ड डिस्क या एसएसडी के अंदर। सही है। ये शॉर्ट में हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर था। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक चीज से नहीं बनता। जो पूरा आर्किटेक्चर है वो बनाने के लिए तीन चार चीजें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला हमारे पास है रजिस्टर। देन फिर आता है हमारे पास बसेस। फिर आते हैं हमारे पास मेन कंपोनेंट्स। अच्छा, अब रजिस्टर क्या चीज है? रजिस्टर टेम्पररीली मेमोरी को स्टोर करता है। टेम्पररी मेमोरी विच स्टोर्स डेटा इन बाइनरी। ये हमारा रजिस्टर है। रजिस्टर एक टेम्पररी मेमोरी है जो कि स्टोर करता है डाटा किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। रजिस्टर दिखने में कैसा है? रजिस्टर इस टाइप का होता है और इसके अंदर ये छोटे छोटे स्पेसेस होती हैं जहां पे हमारा डाटा जाके क्या होता है, स्टोर होता है। फॉर ओके एग्जाम्पल, सर। हमारा डाटा क्या है, 1। ये 1 जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ पर? इस रजिस्टर के अंदर। फिर हमारा डाटा क्या है, 0। 0 जाके स्टोर हो जाएगा इधर। फिर 1 हमारा इधर स्टोर हो जाएगा। 0 इधर हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से रजिस्टर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर एक टाइप का रजिस्टर नहीं होता, तीन चार टाइप के रजिस्टर होते हैं। अच्छा, अब आते हैं सर बसेस पे। हाउ मेनी रजिस्टर्स? अभी रजिस्टर को मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ना, अभी सबका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके बसेस सर। क्या है हमारे पास? नाउ वी कम टू बसेस। बसेस क्या है हमारे पास? बसेस पाथवे होती हैं जो कि ट्रांसमिट करती हैं हमारे डेटा। Sir, there are also three buses system. Sir, there are three buses: address bus, data bus, and control bus. या देयर आर द टाइप्स ऑफ बसेस।
सो बसेस इनका क्या काम होता है, ये हमारा डेटा को क्या करती है, ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तीनों, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस, तीनों के अलग अलग काम। सही है। अच्छा, मेन कंपोनेंट पे आते हैं। मेन कंपोनेंट हमारे पास क्या है? मेन कंपोनेंट हमारे पास है ALU, CU, MU एंड IAS। Sir, ALU is arithmetic logic unit and CU is control unit. Sir, MU and IS. IAS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट एक्सेस स्टोर। सही है। तो ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया बसेस, मेन कंपोनेंट्स एंड रजिस्टर्स का। ठीक है। अब हम आते हैं रजिस्टर्स के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। सुनाओ। Sir, there are five रजिस्टर, registers. या देयर आर 5 registers. Register stores data temporarily. That is what we studied later. That is the first point. Now, so types of registers. There are 6 types of registers. So number one, it is MAR. Then we have MDR. ALU is also a register. ACC, program counter, CIR. तो ये हमारे पास इसके Sir, there 6 are टाइप्स total. आ गए। ठीक है। तो अब हम सबकी डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शंस स्टार्टिंग विद MAR. MAR stores the address of the instruction. जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस होगा कि वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास किधर लोकेटेड है, वो कौन स्टोर करेगा? वो हमारे पास स्टोर करेगा MAR। Sir, it stores the address of instruction. सही है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय MAR? MAR स्टैंड्स फॉर मेमोरी Sir, एड्रेस। जी बोले। sir, where does it store? Where does it store the address of instructions? Sir, in the इट memory. इज नो नो, इट इज अ रजिस्टर। फॉर एग्जांपल, इफ यू सी, दिस इज MAR and these are the columns. So for example, if this is my instruction A, then this address will be stored over here, 1011. This is the address. The place where the address is stored, that is MAR. Means this register, this is MAR. Okay, sir. Okay. Next we are having its MDR. MDR stands for Memory Data Register. Sir, what do you mean by buffer? Buffer is not at this moment. We will be studying it in chapter 4.
Okay, sir. In my book, it is written memory data buffer register. That's why I asked you, sir. Yeah, it is memory data register, or you can say memory data buffer register. Eh, Both are the name of the similar register. So MDR stores the data. It stores the data that is to be processed. For example, this is MDR, and this is my data. So now this is my data, and this is the register. So this data is the data is known as Sir, MDR. It is obvious that there will be some address of this register. That address will be stored in MAR. Both of things are interconnected. okay, sir. Sir, it For only example, st- ये मेरे sir, डेटा it है only मेरा, stores ये the मेरा data डेटा, which is to be processed. यस, ये इस डेटा को मुझे प्रोसेस करना है, तो ये डेटा मेरे पास किधर स्टोर हुआ होगा? एमडीआर के अंदर। लेकिन Okay, इस sir. डेटा का जो एड्रेस होगा, जो कि बाइनरी में होगा, वो मेरे पास किधर स्टोर होगा? Sir, MAR. एमएआर में। सही है, यहाँ तक समझ आ गई? Yes. Yes, sir. सही है। अच्छा, नंबर थर्ड पे जो हमारे पास रजिस्टर है वो है एएलयू। अच्छा, एएलयू हमारे पास कंपोनेंट भी है और रजिस्टर भी है, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। Okay, sir. काम दोनों का ही। इट स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, and its work is to allow arithmetic and logic operations. So arithmetic operations are addition, subtraction, plus, minus, multiplication, division. And the logical operations, it is AND operation, OR operation, and more like that. We'll be studying the logical operations in logic gates. अच्छा, next point of ALU, Sir, ये point समझ में it नहीं आई. is used, Sir, अच्छा जी, sir, ऊपर वाली point समझ में नहीं आई. अच्छा अच्छा, इस पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है अलाउ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड। सही है। Sir, अब sir, the जो, operations of a calculator. हाँ, वही वाले ऑपरेशन जो आप कैलकुलेटर से करते हैं। तो एक्चुअली में एएलयू का जो रजिस्टर होता है वो टोटल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। अब जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं ना, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारी चीजें, तो ये सारा क्या है, ये एएलयू में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको प्रोग्राम कोड लिख के दिखाया था ना एडिशन का, कि नंबर को हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो इसको हम कहीं पे स्टोर कर रहे थे, तो जहां पे स्टोर करेंगे वो एक रजिस्टर है, वो एक मेमोरी है। तो ये सारा Okay, ऑपरेशन sir. करने को अलाउ कौन करेगा? एएलयू। Sir, arithmetic logic unit. So arithmetic logical unit, it only provides us the opportunity to do calculations. And sir, Arithmetic operation and in the second part you have written and, comma, or. and comma are, or these are the logical operation. For example, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था ना, वो until की कंडीशन लिख के दिखाई थी। ये तो इसके अंदर ये जो ऑपरेशन है हो रहा है ना, ये क्या है? एंड ऑपरेशन। ये क्या करेगा?
कि जब ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, तभी जाके ये हमें क्या देगा, हमारा आउटपुट ट्रू देगा। अगर ये मेरे पास फॉल्स होगा, ये मेरे पास ट्रू होगा, तो ये ऑपरेशन हमें आंसर इसका नहीं देगा। तो लॉजिकल ऑपरेशन वो होते हैं जो हमें जो है ना स्टेटमेंट के थ्रू आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड ऑपरेशन है, तो ये हमें जो है आंसर प्रोवाइड करेगा। कैसे? ये दो दो कंडीशंस को चेक करेगा, उन कंडीशन को चेक करके फिर हमें प्रोवाइड करेगा हमारा आंसर। तो इस टाइप के ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, या ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये लॉजिक गेट जब पढ़ेंगे ना, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। Okay, sir. सही है। अच्छा, नंबर 4 के अंदर हमारे पास आता है ACC। इट स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। इट स्टोर्स कैलकुलेशन। अच्छा, इधर कंफ्यूज नहीं होना। ACC हमारे पास क्या है, ये स्टोर कर रहा है किसको, कैलकुलेशंस को। ALU हमारे पास क्या कर रहा है, ये कैरी आउट करवा रहा है किसको, कैलकुलेशंस को। Sir, ACC is storing the ALU calculations, यस। and sir, it is written here it stores data temporarily. यस, बिकॉज it is a register and all the register stores data temporarily. Okay, sir. Okay. जी sir. So ये नाउ नंबर 5 पे जो हमारे पास रजिस्टर है हमारा, वो कौन सा है? वो है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर। PC stands for program counter. Yes, sir. It only counts and stores how many time the our address has run, or how many time the data has been processed. For example, my data, this is my data 101. So here is program counter. It will count when this data will go into the program counter. Program counter will store one only, because it is the first time the data has gone. Then after the whole circle, the new data, when the new data will go, for example, this is my new data 1011. So when my new data will go into the program counter, the program counter will not store one, it will store now two. It will count how many time the data has been input to be processed. Okay. Sir, program counter, I did not understand. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, प्रोग्राम काउंटर। जब मैंने प्रोग्राम Yes, sir. काउंटर के अंदर ये मेरा डाटा इनपुट किया, तो प्रोग्राम काउंटर अपने पास क्या लिख लेगा, 1। क्यों? क्योंकि पहली दफा डाटा इनपुट हुआ है। ये डाटा, ये वाला 101, ये पूरा Yes, सर्कुलेट करके प्रिंट वगैरह हो गया। सही है। अब जब मैं न्यू डाटा इसके अंदर इनपुट करूंगा, सही है, जैसे मेरा न्यू डाटा क्या है, 1011। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा न्यू डाटा है। जब मैं अपना न्यू डाटा इसके अंदर इनपुट करूंगा, तो प्रोग्राम काउंटर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करेगा, काउंट करेगा कि मैं कितनी दफा डाटा इनपुट कर रहा हूँ, ताकि वो प्रोसेस कर सके। okay, sir. तो इसका जो काम को सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग का है। जब जब मैं न्यू डाटा इनपुट करूंगा प्रोसेसिंग के लिए, तो ये क्या करेगा, उसको सिर्फ काउंट करके अपने पास लिख लेगा। Okay, sir. सही है। Yes, sir. तो इसका हम लिख लेते हैं, इट इज यूज टू कीप। इट इज यूज टू कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। नंबर 6 के अंदर जो हमारे पास, Sir, what do you mean by the word fetch? फैच का मतलब होता है कोई भी चीज उठाना, मतलब Okay, कोई sir. डेटा को रजिस्टर में से निकालना या उसको सिलेक्ट करना। तो अब हमारे पास जो न्यू है, समझ आ गया फैच का मतलब? Yes, sir. न्यू न्यू रजिस्टर है हमारे पास, CIR। इट स्टैंड्स फॉर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर।
Sir, this register stores the current instruction being decoded and executed. Yes. Sir, can you explain what do you mean by decoded and executed? एग्जीक्यूटेड का मतलब जो है ना कि जो हमारा फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पास स्टोर हुआ है 1011, सही है, ये मेरा एड्रेस है। इसको Yes, जब मैं sir. फैच करूंगा यानी जब सिलेक्ट करके निकालूंगा अपने पास, तो मुझे इसको डिकोड करना पड़ेगा ताकि मुझे समझ में आए। जब मैंने इसको डिकोड किया मेरे पास क्या आया, सही है, ये मेरे पास क्या आ गया, डेटा। तो ये मेरी क्या हो गई, डिकोड कर दिया। अभी तो मुझे नहीं समझ आ रहा, कीवर्ड में मुझे नहीं समझ आ रहा। जब मैं इसको डिकोड करूंगा तो ये उस लैंग्वेज में आ जाएगा जिसमें फिर मुझे समझ में आए। अब इसको Sir, एग्जीक्यूट करने का मतलब कि इसको एंटर करके रन करना। रन करने का मतलब होता है एग्जीक्यूट। okay, sir. ठीक है, तो जो Sir, सी आई आर sir. होता है, Yes, sir. Sir, this example you gave me, this decoding means, for example, going from binary numbers to the English language. We understand. यस वी कैन से दैट। Okay, sir. तो ये हमारे रजिस्टर्स हो गए। 6 टाइप के रजिस्टर्स हैं हमारे पास, MAR, MDR, ALU, ACC, PC और CIR। सही है, तो अब हम आएंगे बसेस के ऊपर। Yes, sir. तो बसेस हमारा क्या काम करती हैं, बसेस हमारी जो डेटा है उसको लेकर ट्रांसमिट करती है उस डेटा। Yes, sir. एक तरीके से ये व्हीकल का रोल क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि डेटा को ये क्या करेंगी, फॉर एग्जांपल डेटा मेरे पास इस एरिया में, इधर से मुझे इस एरिया में ये डेटा चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, ये बस। यानी ये जो कनेक्शन है ना, ये वाला कनेक्शन, Yes, sir. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बस। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसकी मेन टर्म पे, वो क्या है, सिस्टम बस। सो नाउ व्हाट इज सिस्टम? इट इज अ कंपोनेंट, इज अ पैरेलल कंपोनेंट। Sir, system bus inside system buses there are three buses, right, sir? यस, सिस्टम बस इट इज होल वन बस, बट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम बस: डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। So three types of buses. Number one, data bus. Next type of bus we are having, that is Sir, the address first one. bus. Sir, the first one should be address bus or data bus. It could be anyone because it is the type of bus we there's no chronological order of it. Okay, sir. Sir, there's no order of the buses, but sir, the registers are in the order, right, sir? Yes. So lastly, it's control bus. So what is data bus? It is a bus which holds the data and carry our data between processor, memory, and input-output devices. First of all, it is a bi-directional bus. Now, what is meant by bi-directional bus? It Sir, means that, sir, for example, it means, sir, does it mean that it can go both ways? yes, it is a bi-directional bus, which means that it can take our data in both directions. It is represented in some this way. Yes, sir. Okay, then
Sir, It what is the exchanges. purpose? Sir, what is the purpose of the data bus? Yeah, I'm just telling that. It exchanges the data between processor, Sir, to memory. memory, and I/O devices. Input-output devices. So this is the purpose. It exchanges the data. मतलब ये data को फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर से लेके किधर जाएगा मेमोरी में, या मेमोरी से लेके किधर जाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। ये काम कौन करेगा? हमारा डेटा बस। डेटा को एक्सचेंज करना या ट्रांसमिट करने का काम हमारा कौन करेगा? डेटा बस। Okay, sir. नाउ वी कमिंग एट एड्रेस बस। Sir, address bus can only address bus is not bidirectional, so it can only go one way. Yes, it is unidirectional bus. Unidirectional bus, so this means that it can go only in one direction, either in forward or backward, mostly forward. So the address bus, it carries the signal, or you can say that it carries the address between processor and memory, because between Yes, processor sir. and memory registers are stored. So from Yes, register sir. which are stored in the memory, the that register from that register the address is taken to processor. Sir, using the address bus. Yeah. Sir, with the help of the address bus. Okay, sir. In processor and memory. So this was our address bus. Any question regarding it? No, sir. So this is our last bus, control bus. Sir, So it what is carries out. control? Sir, it carries out signals to the whole computer Yeah. components. Yes. It Sir, can it be also. unidirectional or it can be bidirectional. Sir, this it is bidirectional. So it can be both. Okay, sir. Sir, I Our also control. have one more question. Yes. Sir, will you send this document after class? Yes. Okay, sir. So our control bus can be unidirectional and it also can be bidirectional. Both possibilities are available. Afterwards, it carries the data. So it carries the signals, which coordinates the computer's activity. Sir, can you explain this point again? Yeah. So the control bus, it is a bus which carries the signal. What sort of signal? Any signal which are used to control the computer activity. The control bus, it, for example, there is a CPU. That CPU sends an order to the motherboard. So that order or that signal, which will be in binary bits, for example, 1011, this order will be sent via control bus. Where? To the motherboard. Okay, sir. It just carries the binary signals or binary bits to the computer components such as motherboard and all other components. Is it clear till now? Yes, sir, it is clear. Okay. So now we are coming on main component. Main components. So as I told you, there are four type of main components: ALU, CU,
MU, and IAS. Starting up from ALU we have already studied a little bit. It is also known as processor. ALU is also known as processor because it carries out all the calculation and arithmetical and logical operations. Logical operations are the operation which we take by thinking. For example, if there is a selection, we have to do some selection. For example, there is baseball or cricket. Now we have to do selection. This is the logical operation. Either we will go towards baseball or we will go towards cricket. So what is coming over here? Or this is the logical operation. Okay, sir. Anything that requires thinking is the logical operation. So it is also known as ALU is also known as processor, arithmetic logic unit. Afterward, it carries out all the calculations and decision making. सही है. Yes, sir. Now we'll be coming on control unit. So what is this control unit? It manages the flow of data. The data which is flowing through the CPU is controlled by control unit. And sir, it basically controls and sends signals to the whole computer. Yeah, it reads all the instruction and then interpret them and then sends out the signal what to do and how to do to other components. Used to manage data flow. अच्छा, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है. Control unit reads the instruction, interprets them, sends signals to components via control bus. This is where control bus will be used. We say that control bus carries out the signals to the components. What type of signal are they? These signals are the signals which are generated by control unit. For example, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी कंट्रोल यूनिट को कि मुझे अपने सीपीयू की क्लॉक स्पीड बढ़ानी है. तो मेरा कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? वो इंटरप्रेट करेगा मेरी इंस्ट्रक्शन को. कैसे? वो देखेगा कि भाई मेरी जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी है, ये इंस्ट्रक्शन कौन से पार्ट या कौन सा कंपोनेंट परफॉर्म करेगा. जो सा कंपोनेंट वो इंस्ट्रक्शन मेरी परफॉर्म करेगा, वो चीज इंटरप्रेट करने के बाद, सोचने के बाद, डिसीजन लेने के बाद सिग्नल सेंड होंगे उस कंपोनेंट को थ्रू कंट्रोल बस. Okay, sir. सही है. अच्छा, Yes. जो कंट्रोल बस है ना, इट uses CIR and PC. Sir uses CIR and program counter. Yes, it uses CIR and program counter as registers. Turn off memory unit. Memory unit, it is made up of partitions.
What type of partition? There are two partitions in it. First one is address, and the next one is content. Address Straight partition con. stores the binary values, and content partition stores our data. Okay, sir. Okay, so this is the partition which memory unit is consist of or made up of. Okay, sir. As every content is in front of its address, so it uniquely identifies the content, or it uniquely identify every location within the memory map. So now the thing comes that what is memory map? So this type of thing is known as memory map. Here, this is the address section, and this is the content section. For example, this is my first content A, and the address of my content A is 0011. My second content is B, so the address of B is 0101. ठीक है, तो एड्रेस हमारा किस में होगा? बाइनरी में. कंटेंट हमारा होगा नॉर्मल लैंग्वेज में, या जो सभी कंटेंट है. फॉर एग्जांपल, जब मैंने कंटेंट ए मांगूंगा, मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, मुझे कंटेंट ए की जरूरत है, मैंने लिखा कि भाई मुझे कंटेंट ए चाहिए. जब मैं कंटेंट ए डिमांड करूंगा, तो वो कंटेंट ए को ढूंढने के लिए जब मेमोरी मैप में जाएगा मेरा सीपीयू, तो वो ये चेक नहीं करेगा कि कंटेंट ए किधर है, वो ये चेक करेगा इस कंटेंट का जो ये एड्रेस है वो किधर है. तो ये एड्रेस जो है ना, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है किसको? हर एक कंटेंट को. Yes, sir. सही है? यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. I understand. तो अब जो हमारा टॉपिक है ये है आईएएस. ये हमारा एक और नया कंपोनेंट है जो कि इस साल ऐड किया है. आईएएस, कंटेंट नंबर 4. So what does IAS stands for? IAS stands for Immediate Access Control. Okay, sir. और आईएएस का वर्क क्या है, या इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? वो ये है कि इट होल्ड्स डेटा बिफोर बीइंग प्रोसेस. अगर तुम्हें याद हो, अभी हमने प्रोग्राम काउंटर पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रोग्राम काउंटर है वो डेटा को स्टोर करता है जो कि प्रोसेस हो रहा होता है. लेकिन हमारा जो आईएएस है वो क्या स्टोर करेगा? वो डेटा को स्टोर करेगा, सेम डेटा को स्टोर करेगा, लेकिन उसको जो बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से पहले. समझ आई? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये है प्रोग्राम काउंटर, ये है मेरा क्या? आईएएस. सबसे पहले पहले मेरा जो डेटा होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा डेटा ये है, ये डेटा मेरे पास किधर स्टोर हुआ होगा? आईएएस में. आईएएस के अंदर डेटा स्टोर होने के बाद मेरा डेटा किधर जाएगा? प्रोग्राम काउंटर में. सबसे पहला जो कि प्रोसेसिंग से पहले डेटा स्टोर करेगा वो मेरा कौन होगा? आईएएस. सही है? Yes, sir.